आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए एवं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। Srimati Pratibha Devi Singh Patil, Vice President Sri Hamid Ansari, Honorable Speaker Srimati Meera Kumar, Sri Justice S.H. Kapadia, Chief Justice of India, Prime Minister, Members of Parliament, Your Excellencies, friends, and fellow citizens. I am deeply moved by the high honor you have accorded to me. Such honor exalts the occupant of this office, even as it demands that he rises above personal or partisan interests in the service of the national good. The principal responsibility of this office is to function as the guardian of our Constitution. I will strive, as I said on oath, to preserve, protect, and defend our Constitution, not just in word, but also in spirit. We are all, across the divide of party and region, partners at the altar of our motherland. Our federal constitution embodies the idea of modern India. It defines not only India, but also modernity. A modern nation is built on some basic fundamentals: democracy or equal rights for every citizen, secularism or equal freedom to every faith, equality of every region and language, gender equality, and perhaps most important of all, economic equity. For our development to be real, the poorest of our land must feel that they are part of the narrative of rising India. I have seen vast, perhaps unbelievable changes during the journey that has brought me from the flicker of a lamp in a small Bengal village to the chandeliers of Delhi. I was a boy when Bengal was savaged by a famine that killed millions. The misery and sorrow is still not lost on me. We have achieved much in the field of agriculture, industry and social infrastructure, but that is nothing compared to what India, led by the coming generations, will create in the decades ahead. Our national mission must continue to be what it was when the generation of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Babu Rajendra Prasad, Baba Saheb Ambedkar, and Maulana Azad offered us a tryst with destiny to eliminate the curse of poverty and create such opportunities for the young that they can take our India forward by quantum leaps. There is no humiliation more abusive than hunger. Trickle-down theories do not address the legitimate aspirations of the poor. We must lift those at the bottom so that poverty is erased from the dictionary of modern India. What has brought us thus far
will take us further ahead. India's true story is the partnership of the people. Our wealth has been created by farmers and workers, industrialists and service providers, soldiers and civilians. Our social harmony is the sublime coexistence of temple, mosque, church, gurdwara, and synagogue. They are symbols of our unity in diversity. Peace is the first ingredient of prosperity. History has often been written in the red of blood, but development and progress are the luminous rewards of a peace dividend, not a war trophy. The two halves of the 20th century tell their own story. Europe, and indeed the world, reinvented itself after the end of the Second World War and the collapse of colonization, leading to the rise of great institutions like the United Nations. Leaders who ordered the great armies into the field and then understood that war was more barbarism than glory, transformed the world by changing its mindset. Gandhiji taught by example and gave us the supreme strength of non-violence. India's philosophy is not an abstract in the textbooks. It flourishes in the day-to-day life of our people who value the human above all else. Violence is external to our nature when, as human beings, we exorcise our sins with penitence and accountability. But the visible rewards of peace have also obscured the fact that the age of war is not yet over. We are in the midst of the Fourth World War. The third was Cold War, but it was very warm in Asia, Africa, and Latin America, till it ended in the early 1990s. The war against terrorism is the fourth, and it is a world war because it can raise its evil head anywhere in the world. India has been on the front lines of this war long before many others recognized its vicious depth or poisonous consequences. I am proud of the valor and conviction and steely determination of our armed forces as they have fought this menace on our borders, of our brave police forces as they have met the enemy within, and of our people who have defeated the terrorist trap by remaining calm in the face of extraordinary provocation. The people of India have been a beacon of maturity through the trauma of whiplash wounds. Those who instigate violence and perpetuate hatred need to understand one truth. Few minutes of peace will achieve far more than many years of war. India is content with itself and driven by the will to sit on the high table of prosperity. It will not be deflected in its mission by noxious practitioners of terror. As Indians, we must, of course, learn from the past, but we must remain focused on the future. In my view, education is the alchemy that can bring India its next golden age. Our oldest scriptures laid the framework of society around the pillars of knowledge. Our challenge is to convert knowledge into a democratic force by taking it into every corner of our country. Our motto is unambiguous: all for knowledge and knowledge for all. The weight of office sometimes becomes a burden on dreams. The news is not always cheerful. Corruption is an evil that can depress the nation's mood and sap its progress. We cannot allow our progress
to be hijacked by the greed of a few. I envisage an India where unity of purpose propels the common good, where center and state are driven by the single vision of good governance, where every revolution is green, where democracy is not merely the right to vote once in 5 years, but to speak always in the citizens' interest, where knowledge becomes wisdom, where the young pour their phenomenal energy and talent into the collective cause. As tyranny dwindles across the world, as democracy gets fresh life in regions once considered inhospitable, India becomes the model of modernity. As Swami Vivekananda, in his soaring metaphor, said, India will be raised not with the power of flesh, but with the power of the spirit, not with the flag of destruction, but with the flag of peace and love. Bring all the forces of good together. Do not care what be your color, green, blue, or red, but mix all the colors up and produce the intense glow of white, the color of love. Ours is to work. The results will take care of themselves. There is no greater reward for a public servant than to be elected the first citizen of our republic. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. महामहिम, आपने यहाँ अभी भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर अपना स्वीकृति अभिभाषण किया है। आपकी अनुमति से मैं अभिभाषण के हिंदी पाठ के आरंभ और अंत के अंश पढ़ता हूँ। कृपया शेष पढ़ा हुआ मान लिया जाए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री हामिद अंसारी, श्रीमती मीरा कुमार, न्यायमूर्ति कपाडिया, संसद सदस्यों, महामहिमगण, मित्रों और देशवासियों, आपने मुझे जो उच्च सम्मान दिया है, मैं उससे अभिभूत हूँ। ये सम्मान इस पद पर बैठने वाले को आनंदित करता है और उससे ये भी अपेक्षा करता है कि वे देश के भलाई के लिए कार्य करते हुए व्यक्तिगत अथवा पक्षपात की भावना से ऊपर उठकर काम करें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने सुप्रकाशित रूपक में कहा था कि भारत का उदय होगा शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि मन की ताकत से, विध्वंस के ध्वज से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के ध्वज से। अच्छाई की सारी शक्तियों को इकट्ठा करेंगी। ये न सोचें कि मेरा रंग क्या है, हरा, नीला अथवा लाल, बल्कि सभी रंगों को मिला लें और सफ़ेद रंग की उस प्रखर चमक को पैदा करें जो प्यार का रंग है। हमारा दायित्व है काम करना, परिणाम खुद ही आ जाएंगे। किसी भी जनसेवक के लिए गणतंत्र का प्रथम नागरिक चुना जाने से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। जय हिंद।
महामहिम, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो आपने देखा परंपरागत समारोह किस तरह से समाप्त हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति के आदेश पे करती है। अगर आप आकाशवाणी के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम देने जाते हैं और आपको एक चेक भी मिलता है तो उस पर लिखा होता है भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार। और संगीता, वही कुछ हमको यहाँ पर दिखाई दिया, जिस तरह से होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह तमाम जगहों पर उनसे अनुमति चाह रहे थे कि अगर आप अनुमति दे तो मैं ये करूं। जी हाँ दीपक, जहाँ भी जब राष्ट्रपति की मौजूदगी में जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर उन्हें बिल्कुल एक कहें कि जो राजसी अंदाज में उनसे पूछा जाता है कि अगर आपका आदेश हो तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। फिर कार्यक्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हर स्टेप पे उनसे अनुमति ली जाती है कि महामहिम आपके आदेश से ये करें। यहाँ तक जैसा हमने देखा कि आर.के. सिंह ने जब समाप्ति के लिए भी या किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति भवन भी आप जाएँ और वहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है कि महामहिम इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। फिर आखिर में उनसे अनुमति लेकर के ही उस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। तो वही परंपरा यहाँ पर दिखी। यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने प्रणब मुखर्जी जी को कई दशकों से बड़े नजदीक से देखा है। आज उनके चेहरे पर एक सुकून, एक शांति और एक अलग ढंग की चमक थी। क्या कारण होगा इसका? क्योंकि देखिए, जब एक राजनीतिक उनके जो सेटिस्फेक्शन। मुकुल रॉय मैं बताऊं, सबसे कोने में जो दिखाई दिए थे वहां पे खड़े मुकुल रॉय। हम ये बहस कर रहे थे कि ममता बनर्जी का है, मुकुल रॉय है, तो ममता बनर्जी भी उस कोने में जरूर होंगी। अभी उन्होंने सैल्यूट किया, वो क्या ममता बनर्जी की बिल्कुल कोने में थी, कोने में थी, बिल्कुल रहती है ममता बनर्जी और रुक के नमस्ते किया हमको दिखाई दिया अच्छे अंदाज में। बिल्कुल रोटी भी बहन करती है।